हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VGR इंडिया। आज मैं आपके लिए लाया हूं VGR का बेस्ट सेलिंग ट्रिमर VGR V055। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। शुड अ ट्रिमर बी पार्ट ऑफ every men's grooming kit? The answer is a resounding yes, and I will tell you why. But first, let's discuss what are the uses of a trimmer. So you can use a trimmer to cut your hair, to groom, style and shave your beard, to remove hair from your ears and nose, and you can also use it for complete body grooming. तो आप कहोगे ये तो हम सैलून में भी कर सकते हैं। सो यू आर पार्शली राइट। सैलून में आप हेयर एंड बियर्ड तो कर सकते हैं, बट बिलो द नेक रीजन नो हेयर स्टाइलिस्ट इज गोइंग टू टच यू। वो आपको घर पे ही करना होगा। प्लस देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ ट्रिमर। इट सेव्स टाइम। आप कोई भी सैलून में चले जाओ, ट्रैवलिंग एंड वेटिंग टाइम लेके 1 घंटा तो आपका जरूर वेस्ट हो ही जाएगा। So for busy professional like me, I prefer to cut my hair in a salon once a month, but I take care of my beard twice a week at home. B, it will save you money. So आप कोई भी mid to high range salon में चले जाओ, for hair cutting and beard shaving or trimming, it would cost you anywhere between 200 to 500. But हमारा VGR का V055 trimmer आता ही 799 में है। See, it will save you from embarrassment. Imagine you are going to a meeting and you want to make a really good impression on the people you are meeting, and you have hair coming out of your ear and nose and you smell bad because of odor from your armpit. It's a nightmare. Hence, it is very important for you to be very well groomed. So without wasting any more time, let's bring in the star of today's video, presenting the VGR V055 Professional Hair Trimmer. So guys, why this product is such a star product? Well, you can go on Amazon.in and check it out. This product has over 15,000 reviews with an average product rating of 4 stars and up. And this product comes in a completely sealed, tamper-proof packaging. And the outer box of the product is very sturdy. So now we will just go ahead and open the box and let's see what do we have inside the box. The trimmer itself looks really cool. It has a really cool green highlight around it. It has a real ergonomic design which fits really well into your hand. The product is really lightweight. The trimmer weighs around 125 grams. First, we need to remove the protective tape. This protects the trimmer from accidentally getting on. There are 2 switches here. One is your on and off button and the other one is for blade adjustment. Let's see what else we have in the box. So you get 4 guide combs, 3mm, 6mm, 9mm and 12mm. You get a USB cable, you get a blade oil, a cleaning brush and a user manual. What more features this trimmer has? You can use it cordless and corded, which means it can be used while charging also. And it comes with 2-meter USB cable, which makes it very easy to use while it is plugged in. The trimmer has a runtime of 120 minutes, and while the charging time required is only 90 minutes. I feel this feature makes this trimmer superior to many trimmers, which are in the range of 1200 to 1500 rupees, but require 8 to 10 hours of charging. This trimmer comes with a 500 mAh lithium ion battery. The trimmer provides you with a trimming range of 1 to 12 mm. This trimmer has a very powerful motor of around 6000 RPM. It is a complete IPX6 waterproof trimmer. Also, the blades are made up of stainless steel. And finally, it comes with a 12-month warranty. So if there is any issue, kindly contact us at warranty@vgrindia.co.in. So we have done the unboxing and shared all the features. But you guys must be wondering how the product actually performs. So who better to test and review the product than a hairstylist? So come with us. Let's hear it from the expert. सर, मेरा नाम है अयूब सलमानी और मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और मेरे शॉप का नाम है प्रिंस हेयर स्टूडियो, मीरा रोड, और 25 साल से मैं यहाँ पे ये शॉप चला रहा हूँ और मेरी खुद की शॉप है। सर, मैंने अभी तक है ना VGR की 3 मशीनें यूज़ की हैं। पहली मशीन मैंने यूज़ की है
085 और दूसरी मशीन मैंने यूज़ की है 282 और तीसरी मैंने मशीन यूज़ की है 683। ये तीनों मशीनें मैंने यूज़ करी हैं और बहुत ही अच्छी चलती हैं, एकदम मक्खन के जैसी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक। और अभी एक मशीन और मेरे हाथ में आई है जिसका नंबर है 055। तो मैं ये यूज़ करके आपको बताऊंगा कि ये मशीन कैसी है। इस मशीन में एडजस्टमेंट भी है और इसका बैटरी बैकअप वो 120 मिनट है और 90 मिनट इसको चार्ज करने का है। और इसको वायर पे भी चला सकते हैं, विदाउट वायर भी चला सकते हैं, वायर पे भी चला सकते हैं इसको। सर कहीं आपका बाल तो नहीं खींच रहा है? नहीं, एकदम स्मूथ है। और ये एकदम स्मूथ चलती है और इसको पकड़ने में भी आसानी है बहुत। दूसरी मशीनों में ऐसा नहीं है। कोई मशीन ऐसी है बाल खींचने लगती हैं, लेकिन VGR में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से चलती है ये। हमारी शेव हो गई है और 2 मिनट लगे हैं मुझे इसको शेव करने को, और मैं इसे 10 में से 9 स्टार देता हूँ। और ये कंपनी बोलती है कि वाटरप्रूफ है और मैं इसको धो के देखता हूँ कि ये सच में वाटरप्रूफ है क्या, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ। और इसकी 1 साल की वारंटी भी बोलती है कंपनी। तो अभी देखते हैं इसको धोने के बाद में मालूम पड़ता है क्या है। अभी मैंने मशीन को वॉश किया है। वॉश करने के बाद में अभी इसको क्लीन करके देखता हूँ कि कैसे चलती है ये। धोने के बाद भी और भी अच्छी चल रही है ये। और ये होम केयर के लिए भी अच्छी है, शॉप के लिए भी अच्छी है। और सिर्फ 800 रुपये की ये ट्रिमर है। इसको अच्छे से आदमी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पानी में गई तभी भी कोई दिक्कत नहीं है और इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। So as I told you friends, this is such a star product and you just heard it from the expert. If you wish to buy this trimmer, kindly check all the links given in the description box. You can buy it from our own website also, vgrindia.in, where you can use the code VGR10 and you will get an extra 10% discount. So hurry up. So friends, if any one of you are planning to start your own e-commerce business but are not sure where to start, let me help you by sharing with what I did. So the first thing that needs to be decided is the product. What are you planning to sell? If you have the product started, then great. But like me, when I started, if you have no idea where to start, then I will share what I did in such a scenario. Remember, products like helium were not available back then. And even though they are available now, I would suggest you to first research products manually. Just go to amazon.in and type in different keywords like socks, shoes, handbags, etc. and check for ratings and reviews on the product. If the product has a very high number of ratings and reviews, which means that the sale of that product is very high. Then check if similar products are being sold by multiple sellers. This will tell you whether this is a branded or a generic product. Remember, here we are looking only for generic products because making products in your own brand name is a very costly and risky business. So ideally, you should start your first business with trading and then move on to launching your own brand. So once we have shortlisted 5 to 6 generic products, then go to your local wholesale market, like we have one in Crawford Market in Mumbai, and search for these products. I'm sure you will find your first product to sell online. There are online options available now these days, but I would still suggest visiting the wholesale market. You would definitely get better pricing in the wholesale market. So friends, thank you for watching, and if you have any queries, questions regarding your current business, or if you want to start a new e-commerce business, just drop in an email to me at
businesshelp@vgrindia.co.in and I will definitely reply back. Thank you for watching and please do subscribe, like and share so that we stay connected. Thank you.